Hello students and welcome back. Today we are doing the theme 13, Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement. This is for class 12th. आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे, ये मैं उसी टाइप में बना रहा हूँ. This will be having MCQ and with every MCQ I will try and refer the book so that we can understand some short question answers और कुछ भी additional हम चीज़ समझ सकें तो हम समझ पाएंगे. So let's quickly begin. Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement, MCQ and short question answers. So students, the first question is, why was Charkha chosen as a national symbol? चरखे को national symbol क्यों choose किया गया था? Options हैं symbol of self-reliance and patriotism, symbol of anger and self-confidence, symbol of self-reliance and self-confidence, symbol of nationalism and self-confidence. So students, आप देखेंगे symbol of anger and self-confidence हो नहीं सकता. Symbol of self-reliance ज़रूर था, पर patriotism इसमें नहीं आता है. Symbol of self-reliance and self-confidence ज़रूर आता है. Symbol of nationalism and self-confidence, हम तो पूछ ही रहे हैं कि nationalism का symbol था, पर क्यों था? तो इसका आंसर है symbol of self-reliance and self-confidence. हम बुक को रेफर करेंगे. इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन दिस चैप्टर अबाउट द चरखा. आप देखेंगे महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली क्रिटिकल ऑफ द मॉडर्न एज इन विच मशीन्स enslaved humans and displaced labor. He saw the charkha as a symbol of human society that would not glorify machines and technology. The spinning wheel, moreover, could provide the poor with supplementary income and make them self-reliant. तो self-reliant होंगे तो confidence भी आएगा. And इसमें ये भी लिखा है, what I object to is the craze for machinery as such. The craze is for what they call labor-saving machinery. Men go on saving labor till thousands are without work and thrown on the open streets to die of starvation. I want to save time and labor, not for a fraction of mankind, but for all. I want the concentration of wealth, not in the hands of few, but the hands of all. Khaddar does not seek to destroy all machinery, but it does regulate its use and check its weedy growth. It uses machinery for the service of the poorest in their own cottages. The wheel is itself an exquisite piece of machinery. So, self-reliance or self-confidence was the main reason why it was chosen as a national symbol. The next question is, Khilafat agitators demanded the restoration of powers of German Kaiser, Mughal Emperor, Ottoman ruler or British monarch. So इसका आंसर है, they want the restoration of powers of Ottoman ruler. देखेंगे बुक में, what was Khilafat movement? The Khilafat movement, which was done between 1919 and 1920, was a movement of Indian Muslims led by Muhammad Ali and Shaukat Ali that demanded the following: the Turkish Sultan or Khalifa must retain control, यानी कि Ottoman, over the Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire. The Jazirat ul Arab must remain under Muslim sovereignty, and the Khalifa must be left with sufficient territory to enable him to defend the Islamic faith. The non-cooperation movement was suspended due to the Chauri Chaura incident, Kakori conspiracy, Lahore conspiracy or Jallianwala Bagh massacre. And students, इसका आंसर है, the non-cooperation movement was suspended due to the Chauri Chaura incident. इसके बारे में हम पढ़ते हैं. If you refer the book, अब book में देखेंगे, as a consequence, non-cooperation movement, the British Raj was shaken to its foundation for the first time since the revolt of 1857. Then in February 1922, a group of peasants attacked and torched a police station in the hamlet of Chauri Chaura in the United Provinces, which is now Uttar Pradesh and Uttaranchal. Several constables perished in the conflagration. This act of violence prompted Gandhi ji to call off the movement altogether. So ये इस इंसिडेंट के कारण गांधी जी ने मूवमेंट को वापस लिया. आप देखेंगे बुक में दिखाया हुआ पिक्चर चौरी चौरा मूवमेंट का. और उन्होंने कहा, no provocation, he insisted, can possibly justify the brutal murder of men who had been rendered defenseless and who had virtually thrown themselves
ऑन द मर्सी ऑफ द मॉब। तो मतलब वहाँ पे लोगों को मार दिया, जला दिया, तो गांधी जी को बड़ा बुरा लगा, इसलिए ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट ऑफ बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस? Gandhiji postponed civil disobedience movement, declaration of Poon Swaraj, opposite Rowlatt Act और support of the खिलाफत movement। तो स्टूडेंट्स, जो लाहौर सेशन था 1922 में जो कांग्रेस का हुआ था, इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर टू मेन रीजन, जिसमें से इसमें एक लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। तो आंसर इसका यही है। हम बाकी और पढ़ते हैं, हम बुक रेफर करते हैं, आप देखेंगे। इन द एंड ऑफ दिसंबर 1929 कांग्रेस हेल्ड इट्स एनुअल सेशन इन द सिटी ऑफ लाहौर। द मीटिंग वाज significant for two things: the election of Jawaharlal Nehru as president, signifying the passing of the baton of leadership to the younger generation, and the proclamation of commitment to Poon Swaraj, मतलब पूर्ण स्वराज की कमिटमेंट और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो दो चीज़ें थी, जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया और पूर्ण स्वराज कमिटमेंट हुआ। सो दिस इज टू थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेयर डिड गांधी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम? इन इंग्लैंड, इन साउथ अमेरिका, इन इंडिया और इन साउथ अफ्रीका? एंड स्टूडेंट्स, इसका आंसर है फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी यूज सत्याग्रह एट साउथ अफ्रीका। हम बुक को रेफर करते हैं। मोहनदास इन जनवरी 1915 मोहनदास करमचंद गांधी returned to his homeland after 2 decades of residence abroad. These years had been spent for the most part in South Africa, where he went as a lawyer and in time became a leader of the Indian community in the territory. यानी कि वो लॉयर की तरह गए थे, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो इंडियन कम्युनिटी के लीडर बन गए। एज द हिस्टोरियन चंद्रन देवनसन मार्क, South Africa was the making of the Mahatma. It was in South Africa that Mahatma Gandhi first forged the distinctive techniques of non-violent protest known as Satyagraha. First promoted harmony between religion. तो यहाँ पे था सबसे पहले साउथ अफ्रीका में, जहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह यूज़ किया था। सत्याग्रह इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। थोड़ा और हम इसके बारे में पढ़ते हैं। Let's read a little bit more about Satyagraha. अब देखेंगे गांधी जी ने हर जगह सत्याग्रह का यूज किया है। It was Rowlatt Satyagraha that made Gandhiji a truly national leader. Emboldened by its success, Gandhiji called the campaign for non-cooperation with British rule. तो ये सत्याग्रह इतना यूज किया कि मुझे समझ में आ गया कि नॉन कोऑपरेशन, इन सब से ही जब बिना लड़ाई करे आप अपनी बात आगे रख सकते हैं और अपोज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। दैट इज वाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा इसके बारे में जितना पढ़ सकते हैं ज़रूर पढ़ लेना। द जर्नल हरिजन वॉज पब्लिश्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद। स्टूडेंट्स, इसका आंसर बड़ा इजी है। इट वॉज पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। अब देखेंगे बुक में, महात्मा गांधी रेगुलरली पब्लिश्ड इन हिज जर्नल हरिजन letters that others wrote to him. Nehru edited a collection of letters written to him during the national movement and published a bunch of old letters. तो आपके पास यहाँ पे दोनों आंसर मिल गए। क्वेश्चन आ गया, what was the bunch of old letters? So it was the collection of letters which were sent to Mahatma Gandhi and collection of those which was edited by Nehru. They were a bunch of old letters, and Mahatma Gandhi used to publish his journal Harijan, which included the letters written to him by others. Dash was the Congress president at its Lahore session or Lahore session. महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि दो इंपॉर्टेंट थिंग हुई थी लाहौर सेशन में, एक तो पूर्ण स्वराज और दूसरा जवाहरलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट। तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। Mahatma Gandhi left India for South Africa in 1905, 1893, 1889 और 1885 एंड स्टूडेंट्स इसका आंसर है 1893। हम बुक भी रेफर करेंगे। द इंडिया दैट महात्मा गांधी केम बैक टू इन 1915
was different from the one that he had left in 1893. यानी कि 1893 में वो गए और वापस 1915 में आए. This is again very easy one, students. The father of our nation is Bhagat Singh, Bal Gangadhar Tilak, Mahatma Gandhi or Jawaharlal Nehru. Very easy answer. It is Mahatma Gandhi, who is called as father of our nation. Jinnah called for a dash to oppress the League's demand for Pakistan. Direct Action Day, Quit India Day, Rowlatt Day or Civil Disobedience Day. And students, ये भी important है. Jinnah called for a direct action day to press the League's demand for Pakistan. Jinnah called for a direct action day to press the League's demand for Pakistan. On the designated day, 16th August 1946, bloody riots broke out in Calcutta. The violence spread to rural Bengal, then to Bihar, and then across the country to the United Provinces and the Punjab. In some places, Muslims were the main sufferers, in other places, Hindus. So it was a very important part. And this brings to the end of the part 1. मैं part 2 बहुत जल्दी publish करूँगा. I hope you will enjoy the video and it will help you for your exams. I wish you all the success and good luck for your exams. Keep watching and keep sharing.